Good evening, everyone. Welcome to the daily editorial discussion series. As we have discussed earlier also, that we will be trying to highlight those important topics. And I hope that your prelims preparation is on track. You need to ensure that you are following the daily news articles, and subscribing to our channel helps us stay motivated to keep bringing this uh, series, and we encourage you to do subscribe and leave your comments and how you want this editorial discussion series to go. So without much ado, let's get started. We have picked up few important articles that are relevant. So let's start. So today is 15th of January, and we have seen that the Honorable Prime Minister has successfully, he has inaugurated and he dedicates these three naval platforms to India. So Prime Minister Modi has inaugurated these uh, INS Surat, INS Nilgiri and INS VAGSHEER to the nation. So this is the first time, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि first ever ट्राई कमिश्निंग ऑफ अ डिस्ट्रॉयर, अ फ्रिगेट एंड अ सबमरीन. तो सबमरीन है, इसमें एक फ्रिगेट है और एक डिस्ट्रॉयर है. ये पहली बार ऐसा हो रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू एनहांस. So this is going to enhance India's nuclear capabilities, India's maritime capabilities, and help maritime capabilities को इंडिया की ये enhance करेगा. ठीक है, and it is going to ensure how इंडिया हमेशा ये advocate करता रहा है for a free and open Indo-Pacific, and India's objective has been to maintain a very fair trade in the Indo-Pacific region, Indo-Pacific and particularly South Indian Ocean. तो वहाँ पे Chinese hegemony है, जो Chinese hegemony. So the idea is to counter the Chinese hegemony in the Indo-Pacific region. This is an important consideration that we have to understand. So ये याद रखिए कि तीनों naval platforms का नाम INS Surat, Nilgiri and INS VAGSHEER. So these are the three important things. ठीक है. So प्रधानमंत्री मोदी ने डेडिकेट किया. और एक important इसमें ये चीज़ है कि you have to understand that all the three platforms, they have been designed and built entirely in India. So this is another important thing, that all the three are built entirely in India. This is an important fact to be remembered, that indigenous है ये. We have an indigenous production. So प्रधानमंत्री मोदी और हमारा जो डिफेंस procurement committee है under CCS, so it has been advocating आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं. आत्मनिर्भर भारत अभियान, when we talk about the आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसमें हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी एक जो state of the art infrastructure है उसको डेवलप कर रहे हैं. So Prime Minister Modi has said this is a proud moment for India's maritime heritage and Navy's glorious history. You can quote this statement. Always pick up these statements and you can use them verbatim in your answers, because when a premier of a country quotes, so it holds a much important relevance. So for the first time, as we have already discussed, a destroyer, a frigate and a submarine are being commissioned together. It showcases India's modernization and self-reliance of India's defense sector. So just remember this, कि ये तीनों platforms एक ही दिन में commission हुई हैं on Army Day. Today is Army Day also. So we salute to all the martyrs, all the veterans, all the officers who have served the country at the altar of their life. So it's dedicated to all those people, and particularly you understand that KM Kariappa, when he took over as the first uh, Indian origin chief of the army, that also holds an important significance in India's military history. So this was our first article for the day, the induction of these three important frigates into India's naval architecture. Now another important thing, एक और important चीज है that is making the rounds, and that is very important from your internal geopolitical perspective. Geopolitics में अगर आपको समझना है तो this becomes very very important. पिछले 1.5 साल से अक्टूबर 7 2023 onwards आपने देखा था कि जब हमास फायर्ड रॉकेट्स इनटू इजराइल, ठीक है, तब से
Hamas fired rockets into Israel. So it opened a Pandora's box, and the temperatures in the Middle East, in the West Asia region, the temperatures they soared, and we have been seeing a lot of conflict in the region. तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और पिछले कुछ 6 महीने से द कॉन्फ्लिक्ट हैज इवन इंक्रीज अ लॉट मोर. हमने देखा किस तरह से इस्माइल हनिये वाज टर्मिनेटेड in the Iranian capital. Also, there was this leader of Hezbollah also. He was also taken out. So a lot of these things are happening. अब इस बीच में there is a new development that is happening, that Israel हमास का एक truce हो रहा है. They are considering the terms of ceasefire. तो उसके terms and conditions क्या हैं? तो इसमें various countries हैं जो इसमें they are playing as a negotiating partners. So इसमें Egyptian partners are there, US is also involved, Qatari mediators are also involved. These are the three major parties which are helping to mediate between Israel and Hamas. Hamas being an extremist terrorist organization based in the Gaza. So what are the basic terms and conditions? तो सबसे पहले अगर ये ceasefire deal है जो it goes through, if the ceasefire between this Israel and Hamas goes through, तो 42 days तक, 42 दिन तक the fighting is going to stop. तो ये important चीज है कि 42 days time period has been given, 42 days have been given to negotiate a truce, negotiate the terms of conditions. के पास इनको 42 दिन का टाइम इन्होंने लिया है. इसमें क्या होगा कि dozens of Israelis हैं, Israeli hostages हैं जो they are lying in under the Gaza Hamas control, and hundreds of Palestinian prisoners. तो ये free, so this will be an exchange. So Palestinians will be freed, and a lot of Israeli hostages, they will also be freed. So it is a kind of an exchange. So इस period में ये भी होने वाला है कि first phase में Israel will pull back to the edges of Gaza. तो Israel अपनी जो troops हैं, Israel अपनी troops को pull back करेगा. Israel will pull back its troops. Israel will pull back its troops. ठीक है? That is going to be a condition, because truce के लिए you have to create amicable conditions also. और बहुत सारे पैलेस्टीनियंस हैं वो अपने घर जा पाएंगे. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. हमने देखा है पिछले 3 से 4 साल में यूक्रेन की वॉर भी हुई है. Ukraine war is also been happening, and now this conflict in the Middle East, predominantly between Israel and Gaza, Israel and Hamas in the this Middle Eastern region, in the Levantine region, the area bordering the Mediterranean Sea. So this has been happening. Now Bashar al-Assad has also been ousted. So a lot of things are happening in this region. इस बीच में इस तरह का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आना, एक पीस का एक सिग्नल दिखना, दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसमें क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू इजराइल, यूएस, इजिप्शियन एंड कतारी मीडिएटर्स हु हैव अ वेरी टफ जॉब एट देयर हैंड्स कि गाजा को किस तरह से गवर्न किया जाएगा. तो इसराइल ये भी डिमांड कर रहा है कि हमस को एलिमिनेट किया जाए. तो बहुत सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है. तो इसमें सबसे पहले क्या होने वाला है कि फर्स्ट फेज में हमस इज गोइंग टू रिलीज 33 hostages in exchange for freeing of hundreds of Palestinians imprisoned by Israel. तो पहले 33 इसराइलीज को रिलीज किया जाएगा. तो काफ़ी पैलेस्टीनियंस हंड्रेड्स ये बाहर भी आएंगे. तो इसके एंड में ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे बच्चे हैं, विमेन हैं, और जो वृद्ध लोग हैं, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है आपकी, तो वो उनको मिलिटेंट कंट्रोल से उनको एक चैन की सांस वो ले पाएंगे. तो that was the first important development. Second important development that is happening in this during this first phase is a proposed deal. In the first phase is Israel troops to pull back into the buffer zone. Buffer zone में थोड़ा पीछे आएंगे. So this is, if you consider, this is that, so the buffer zone created है, इसमें they will come back 1 kilometer. So they will pull back of troops by Israel around a kilometer or 0.6 miles inside Gaza along its borders with Israel. So this is one important thing. Thirdly, throughout the war, Israel ने क्या किया है? Israel military ने north
को रेस्ट ऑफ गाजा से, तो नॉर्थ को रेस्ट ऑफ गाजा से इसराइल ने सेपरेट करके रखा था. इट हैड सेपरेटेड इट थ्रू द सो कॉल्ड नेट जरिम कॉरिडोर. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए द नेट जरिम कॉरिडोर विच इज रिसेंटली इन न्यूज refers to what? So it refers to this minor strip which separates north of Gaza to the rest of it. So that is also one thing that you need to understand. Next important point is में that throughout the first phase, जो first phase of negotiation जो चल रहा है ये ceasefire का, Israel is going to retain the control of the Philadelphia corridor. So Israel के पास इस Philadelphia corridor का कंट्रोल भी रहेगा. दिस इज अ स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी गाजा के बॉर्डर के साथ है, इजिप्ट के साथ, ठीक है, इंक्लूडिंग राफा बॉर्डर, राफा क्रॉसिंग. तो राफा क्रॉसिंग A+B फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो गाजा के बॉर्डर को इजिप्ट के साथ जो लगता है, जो इजिप्ट के साथ गाजा का बॉर्डर लगता है, ये उस रीजन में ये कंट्रोल फर्स्ट फेज में इसराइल के पास रहने वाला है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू how this truce is going forward. Next, जब phase 2 शुरू होगा, तो phase 2 broad outlines are laid out in the draft itself. ठीक है, उसमें क्या होगा, सभी जो बाकी hostages जो बच जाएंगी तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा. They will also be released in return for complete Israeli withdrawal from Gaza and a sustainable calm. तो long term peace is expected. Long term peace is expected. Okay, so we are expecting long-term peace after the second phase. अब एक इसमें caveat क्या है? What is a caveat here? So there is a red herring here. There is a point of caution that without the deal closing in 42 days, अगर 42 days में deal close नहीं होती है, deal closing in 42 days to begin the second phase, ठीक है, second phase, तो Israel could resume its campaign. तो इसराइल अपनी कैंपेन को रिज्यूम करेगी इन गाजा, डिस्ट्रॉय हमस. ठीक है, तो ये एक क्रिटिकल होने वाला है कि these 42 days of truce and negotiations, are going to be critical. So these 42 days of truce and negotiations are going to be critical to achieve lasting peace in the Middle Eastern region. ठीक है, जो तीसरा, ऑब्वियसली अगर हम सेकेंड फेज तक पहुंच जाते हैं तो थर्ड फेज इज गोइंग टू बी likely less contentious. So this is going to be very easy and more bodies of remaining hostages and जो 3 से 5 साल का रिकंस्ट्रक्शन प्लान है गाजा में जो किया जाएगा अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन, इसमें आपको जो कंट्रीज जो नेगोशिएटिंग है, मेन यूएस है, वी हैव इजिप्ट है, and then we have Qatar. So these are the 3 major countries. So you have to understand this. So how this truce coming through and these negotiations between these countries, it's going to be critical. So this truce coming through is going to be critical. It's going to be critical for the global geopolitics. It's going to be critical for global geopolitics. The reason being, the people in Ukraine are closely watching this. We are closely watching this, and a development here will pave the way for a better solution to the Ukraine problem as well, to the Ukraine crisis, how that is going to be happening. So this is going to be critical. So we are hoping that something positive comes out of this. So this is about the ceasefire between Israel and Hamas that is happening. तो इसमें आप एक और चीज करिए, आप हमस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए आपको. What is Hamas? It is an extremist terrorist organization based in Gaza, formed in 1987. Okay, after the first intifada. तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़िए. read in detail about Hamas. Read about this. This will help you understand the overall dynamics. Next is India ready for an idea of dual citizenship? So this many commentators have been talking about this कि India dual citizenship के लिए ready है या नहीं है. तो as we see, currently we have a single citizenship.
currently we have a single citizenship. ठीक है, तो यूएस में यूएस हैज डुअल सिटीजनशिप. इसमें जो काउंटीज हैं, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की सिटीजनशिप अलग होती है और जो यूएस की ओवरऑल सिटीजनशिप है वो अलग होती है. सो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, शुड शुड इंडिया हैव अ डुअल सिटीजनशिप. दो सिटीजनशिप होनी चाहिए, और आर यू हैप्पी विद द करंट स्टेटस? शुड इंडिया हैव dual citizenship regime? So please tell me in the comment section. So next जो important topic है, next जो important news article जो 15 जनवरी में important रहा है, about Mr. Jaishankar, our honorable foreign minister. He is a man who has been making the right noises in the global high table. It is always said in the world of diplomacy it is always said that if you are not on the table, if you're not on the table, then you are the menu. Then you are the menu. So India of late has been at most of the global high tables. India has been making its presence felt in most of the global high tables, and its voices are being heard. And our current foreign minister, Mr. Jaishankar, who happens to be a former diplomat and a foreign secretary as well, he is currently in Spain for a 2-day visit, where he has vehemently presented India's case that India is one of the few countries in a position to talk to Russia, Ukraine, Iran, and Israel. So these 4 countries. Apart from that, India is being looked at a friend and an ally and someone who can be trusted upon. And our stance, as Honorable Prime Minister, has always been echoing his sentiment that we are always on the side of peace. We have always been on the side of peace. We have proclaimed peace, and we like peace. We like to see peace happening in the world. Also, we need to understand here India being a part of Quad, being a part of Quad, which consists of Australia, Japan, US, and Russia. And at the same time, we are also part of the BRICS. That BRICS now, apart from the traditional 5 members, we now have Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, and UAE also joining the BRICS. So we have Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, and UAE, apart from the traditional members of the BRICS, that is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. We also saw that India has recently hosted the last G20 summit in New Delhi, and there have been a very, very positive response to the New Delhi Declaration. New Delhi Declaration happened. So we are certainly making the right noises. Mr. Jaishankar also echoed this sentiment that India has been vociferous in advocating that African Union, which has now become a part of G20, India believed, and India had been forwarding this cause, that this should have happened many years ago. So this shows India being vocal as the voice of the global South, and not just the voice of the global South, but of its echoing its sentiment for the global problems, for the global issues and the matters that concern the global geopolitical scenario that is being reshaped. India is in the midst of things. Also, Mr. Jaishankar has said that the visit of President Pedro Sanchez is the president of Spain, and during his visit, he's mentioned that his visit to India recently was very successful. It was a very successful visit, and Mr. Jaishankar visiting Spain after a gap of 4 to 5 months of Mr. Sanchez's visit to India underscores India's intention to deepen its ties with the Spanish people. Also, there is another development that Spain will be coming up with a consulate in Bengaluru, and we have to understand that embassies, आपको पता होना चाहिए कि embassies होती हैं countries के capitals में,
और जो अदर सिटीज में जो फॉरेन एनक्लेव्स बनती हैं कंट्रीज की, they are called as consulates. So it's good news that there is going to be a Spanish consulate in Bengaluru, and that's mark strengthening of our relations. India and Spain would mark 2026 as the dual year, the year where they'll be celebrating culture, tourism, and artificial intelligence in both the countries. So this also becomes important from your general studies paper 2 GS mains. GS mains paper 2, you have to study in detail about Indo Spain relations. So keep this as a ready reckoner and try to build on that. Okay. Next, we have, see, this is a very unfortunate thing that has been happening in Los Angeles. Los Angeles, United States, the Palisade fires that you must have read about this. The Palisade fires. So a lot of, this is very unfortunate how things are happening. और जो ये ज्योग्राफी का एक आपको विंड्स भी याद रखनी है कि यहाँ पे कौन सी विंड्स सदर्न कैलिफोर्निया में ब्लो करती हैं, जिसकी वजह से ये जो फायर्स का थ्रेट है, इट हैज इंक्रीज्ड इवन मोर. द Santa Ana winds, they are creating more concerns about this fire blowing away. ठीक है, इट्स इंक्रीजिंग. तो इस फायर को डाउज करने के लिए पिंक कलर का एक फायर रिटार्डेंट, पिंक कलर आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि पिंक कलर वाज स्प्रेड ऑन द हिल्स. ठीक है, पिंक कलर का एक कुछ केमिकल था, वो स्प्रे किया गया था. इट वाज यूज्ड एज अ फायर रिटार्डेंट. ठीक है, तो व्हाट वाज दैट पिंक कलर रिटार्डेंट? सो दैट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, या फायर को स्लो डाउन करने के लिए. एंड द केमिकल्स नेम इज फॉस्चेक, विच इज विच कंटेन्स अमोनियम पॉलीफॉस्फेट. ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये जल्दी इवेपोरेट नहीं करता है और पानी की तरह, और लॉन्गर वहां पे रुकेगा, जिससे हम फायर को एक्सटिंग्विश कर पाएंगे. सो आई होप एंड वी ऑल होप कि लॉस एंजलिस पीपल दे फाइंड रेस्पाइट फ्रॉम दीज कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी. एंड इससे आपको एक और हिंट क्या मिलता है फॉर योर GS पेपर 1 and 3, GS paper 1 and GS paper 3 disaster management, the causes of forest fires. So this is your homework, or if you want to work on that, what are the causes of forest fires. ठीक है, आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो इंडिया में आपने देखा होगा वैष्णो देवी में कई बार फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, या उत्तराखंड में नीडल शेप लीव्स हैं, पतले पतले, दे कैच फायर. तो रीजन बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर्स हैं क्यों होती हैं. ऑल्सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज वेल. Next important news from the international front that is coming up is South Korea's impeached President Yoon. He is detained in a massive law enforcement effort. So Mr. Yoon has been detained. His full name is President Yoon Suk Yeol. तो इनको एंटी करप्शन एजेंसी ने डिटेन किया है. तो इन्होंने कहा है कि डिफाइंटली वो इंसिस्ट करते रहे हैं कि एंटी करप्शन एजेंसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करें इनके एक्शंस को, बट सेइंग दैट ही कंप्लाइड टू प्रिवेंट द वायलेंस. बट इसमें काफ़ी कंसर्न्स हैं. तो ये आप इतना इन्फॉर्मेशन याद रखें कि इनको डिटेन कर लिया गया है सियोल में. ठीक है, तो कंट्री के फर्स्ट सिटिंग प्रेसिडेंट हैं जिनको एप्रीहेंड किया गया है, एंड ही इज बीन होल्ड अप इन हनान डोंग रेजिडेंस इन द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया, दैट इज सियोल. तो ये आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आ रही है, पार्लियामेंट्री पैनल शुड क्वेश्चन मेटा मींस फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक की. दिस इज अ पेरेंट कंपनी हेडेड बाय मिस्टर जकरबर्ग. तो फैक्ट चेक गाइडलाइंस ऑन हेट स्पीच, TMC MP मिस्टर साकेत गोखले इन्होंने बोला है. तो व्हाट इज द न्यूज? तो इन्होंने कहा कि मेटा एग्जीक्यूटिव समन किए जाते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दे शुड बी क्वेश्चनड अबाउट कंपनीज डिसीजन to stop fact checking and changes in content guidelines on hate speech and disinformation. ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स की. so that those guidelines, he is claiming that those guidelines have been flouted, और कुछ लीवे दिया गया hate speeches को to be propagated. So some relaxations have been done. ठीक है, फर्दर हम ये भी चीज़ समझते हैं कि ये बड़ा ही सीरियस एक मैटर है जिसकी ग्रेट रैमिफिकेशंस हो सकती हैं भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप पे, क्योंकि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो
It is our duty to exercise oversight and ensure accountability from social media platforms at the highest level. तो ये ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो कंटेंशियस यहाँ पे मर्ज हो रही है कि मिस्टर जकरबर्ग जो हैं, उन्होंने क्लेम किया है किसी पॉडकास्ट में कि जो 2024 में दुनिया भर में इलेक्शंस हुई हैं, मोस्ट इनक्यूम्बेंट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया लॉस्ट पावर। तो इन्होंने ये बोला है कि ये पावर जो सरकारें बनी है वो एक्चुअली पावर लूज कर चुकी थी। तो ये बड़ी ही कंटेंशियस स्टेटमेंट है। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर अश्विनी वैष्णव, यूनियन रेलवेज मिनिस्टर, ही इज अ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर। तो इन्होंने कहा है कि ये स्टेटमेंट काफ़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट है और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के बारे में इस तरह के बात करना, जिसमें 640 मिलियन, which counts to 64 crore people. So that is very insensitive of him, very insensitive and a very immature statement. ठीक है? What the question from our perspective, क्वेश्चन क्या बनता है मीडिया रेगुलेशन पे, सोशल मीडिया एंड मीडिया रेगुलेशन। तो इस पे किस तरह का सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए या चेक्स होने चाहिए। सो दैट ओपन्स अ पैंडोरास बॉक्स, कि हाउ दिस थिंग्स शुड बी डन। So I hope this brings some things in perspective for you. And the last topic for today, today's news article is very important. आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं किसी भी देश के, उनके पास इम्यूनिटी होती है। They have immunity. So Mr. Trump, he had a reprieve. ठीक है, हुआ क्या, what is the actual issue? तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प जो 15 जनवरी को, आई थिंक 26 जनवरी को, आई थिंक 20th January, I'm not getting the exact date, he will be sworn in as the next president of the Republic of United States of America. So he was handed an unconditional discharge. इनको एकदम अलो कर दिया गया। एक felony केस था न्यूयॉर्क में where he was found guilty on 34 counts falsifying business records to make $130,000 in hush payments to an adult film star over an alleged affair. तो ये कुछ इनका felony केस था जिसपे उनको he was allowed to get away. अब ऐसा क्यों हुआ? अंडरस्टैंडेबल है, सिटिंग प्रेसिडेंट है तो देयर आर सर्टेन इम्यूनिटीज, तो they were exercised. So in accordance with the legal immunity for the official acts that is offered to the president of the US, a position affirmed recently by the Supreme Court that 3 indictments had not yet reached the stage of conviction or acquittal. तो जो ये 3 indictments थी, जो 3 इनके इल्जाम थे इन पे, या तो इनकी कन्विक्शन भी नहीं हुई थी और एक्विटल, इट वाज अंडर प्रोसेस। तो इनको डिसमिस कर दिया गया और केम टू अ हॉल्ट ओविंग टू प्रोसीजरल कम्प्लेक्सिटीज की वजह से दैट वाज पुट ऑन होल्ड। ठीक है। दूसरा, हिज इंडाइटमेंट फॉर हिज रोल इन इंस्टिगेटिंग, एक देखिए यूएस कैपिटल हिल पे आपको याद है कि जनवरी 2021 में एक मॉब अटैक हुआ था। इनके ऊपर इल्जाम है कि ही वाज इन्वॉल्वड इन इंसाइटिंग द मॉब। सो हिज इंडाइटमेंट फॉर मिसहैंडलिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स फ्लोरिडा में जो उसके घर पे पाए गए। दूसरा, 2020 में जो इलेक्शन डिफीट, ठीक है, वहां पे वर विड्रॉन बाय स्पेशल काउंसिल। तो ये सारी चीजें इट गोज अगेंस्ट हिम, बट सिंस द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इट फॉरबिड्स फेडरल इंडाइटमेंट एंड सब्सिक्वेंट क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। सिटिंग प्रेसिडेंट को आप क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो, दैट गिव्स हिम दैट लीगल इम्यूनिटी टू गेट अवे विद दिस। बट द इशू इज, आपने देख रहे हो कि एक मागा मूवमेंट बहुत चल रहा है। MAGA movement is Make America Great Again. Make America Great Again. So, Mr. Trump, who is a part of the far right wing of the US. So, these right wingers are getting a lot of leverage in most of the countries. So, deeper question जो अमेरिका को अभी फेस करने पड़ेंगे वो ये है कि इस कैंपेन में इन्होंने फार राइट अपनी टेंडेंसीज को, पोलराइजिंग टेंडेंसीज को यूज किया। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ बाई पार्टिसनशिप विद इन पोलिटिकल सर्कल्स इज एप्लीकेबल टू क्रिटिकल इश्यूज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमी की बात कर लें, जॉब्स की बात कर लें, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात कर लें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर लें, या इमिग्रेशन। सो his ideas have been found wanting. His ideas have been found wanting. So it is actually a serious matter. It is serious matter how the world is going to evolve.
Trump 2.0. We have to see how Trump 2.0 evolves, whether it is more bravado, braggadocio, or the false pride, or just my way or the highway kind of attitude. मिस्टर ट्रम्प हमने पहले भी देखा कि क्लाइमेट जस्टिस को नहीं मानते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, यूएन को इतना वो क्रेडिबिलिटी नहीं देते, या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल फोरा है. He is more of an in your face kind of person. So it remains to be seen how in the times to come the Trump 2.0 pans out for the rest of the world. And we can only hope that there are better times for the American people and some good sense prevails for them as well. But from the Indian perspective, Mr. Trump has good relations with our own Prime Minister, Mr. Modi. So we hope that it bodes well for India, but largely as a voice of the global South, projecting ourselves as a leader, we also hope that there are good times for the world as well, and America chooses to walk down the right path. So that's all from today's newspaper discussion. I'm sure you were able to get a few things here. So I'll see you tomorrow with tomorrow's newspaper analysis. Until then, it's a goodbye. Just a small thing, do subscribe to our channel and leave your comments and help us deliver much beautiful content to you, meaningful conversations. Thank you so much. So also, you join our Telegram channel where we'll be sharing this PDF. You can use this PDF for your own perusal, and do subscribe to the channel, share with your friends, and do share your feedback if you find it good. If you find some feedback coming our way, how we can improve this, feel free to share that as well. It's a goodbye from me. Thank you so much. Jai Hind.